Hello everyone. We are going to start shortly. Abhi, I'm just waiting for some people to join, and we will start at exactly 10 p.m. Please give me a thumbs up if you can hear my voice. Kal I received some microphone issues, so today I'm going to resolve that. Though I am sure this time it will be much different from earlier. Thank you so much. Thank you for your patience. So we're going to start very soon. Let's just see if people can join, and we have a couple of things to discuss with you guys as well. So regarding this whole plan on physiology, ki how we going to cover physiology in about a week or so now. तो आज के लिए nerve muscle and neuromuscular junction, that is nerve muscle physiology, we're going to conclude this in this session only, and it might get थोड़ा सा long, like 1 hour से ऊपर जा सकता है. I'll try my best to finish it up in 1 hour or so, but it will be really appreciated अगर हम आज ही इसको खत्म कर दें, right? Nerve muscle and neuromuscular junction को. So that is the main goal for today. So people are joining in. And regarding the syllabus, that accordingly the plan that we have for like revising physiology, वो कल that is my confidant, that is Shmangi Dhyani, will share her whole plan. How do we plan on going about this revision series or discussion series or so? So the video is going to come out tomorrow or so, and in which we'll be going over ki how we क्या basic हमारा structure है for like pulling this off with you guys, obviously. So the support that I am being receiving is very welcome, and I just hope these sessions are doing you good. We'll start at 10 p.m. exactly. So as you guys all know, nerve muscle physiology थोड़ा सा एक बड़ा सा unit है, and some of the sections in nerve muscle physiology have much to do with cellular physiology. So I'm going to basically cover सिर्फ उतना ही aspects, electrolytes and all जो basic है, that is going to be covered in cellular physiology. आज we are going to start with resting membrane potential, और उस वाले part से आगे की तरफ will proceed on to, right? The section on neurons per se, that comes under central nervous system. So CNS physiology, when we'll be studying CNS physiology, उसमें हम will discuss the types of neurons or the types of synapses, वो सब वहाँ पे हम discuss करेंगे. The extra topic that I have for today is synapses, because I think synapses, it should be covered in nerve muscle physiology, because neuromuscular junction is a chemical synapse, obviously, and chemical synapse 99% of all synapse है. तो यहाँ पे इसे पढ़ना is much more relevant than studying it in CNS. ठीक है? CNS के लिए will be devoting ourselves more to the tracks वाला portion or more to the higher mental functions वाला portion, जो कि ज़्यादा difficult है. यहाँ पे cellular physiology and nerve muscle physiology and CNS will be integrated in this broad section, nerve muscle physiology. So that is the thing. Please don't be overwhelmed by the number of slides. I'm sure we'll be going over them very quickly. Okay? So we have, so people have joined in. So let me just start, okay? So some people can join आगे. So let's not proceed. ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना section. So we'll proceed on to it, okay? Right. So the first topic that I have for you today is the resting membrane potential itself. So what is this RMP? So the resting membrane potential, as you all know, is the potential at which a cell, any cell, it could be a nerve cell, it could be a myocyte, it could be a smooth muscle cell, different cells का different resting membrane potential है, right? Abhi, what we are going to discuss is how is this resting membrane potential generated, right? And what ramification does it have over the action potential, okay? So the resting membrane potential is mainly the first contributing factor is the unequal distribution of the ions in the ICF and the ECF, right? Why? Due to non-diffusible anions. What is that effect known as? This effect is known as the Gibbs-Donnan equilibrium, right? So we have two types of anions. We have diffusible ions, or we can have non-diffusible ions.
एंड इसका फर्क ये पड़ता है कि एज विल सी शॉर्टली इन द गिब्स जॉन एंड इक्विलिब्रियम आई हैव इंक्लूडेड इन नर्व मसल फिजियोलॉजी ओनली. सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस इज वन रीजन कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें मिल रहा है. वन थिंग इज दैट ओनली. Second is relatively impermeability of the membrane to sodium while high permeability to potassium. When the cell is resting. Resting state में the membrane permeability for potassium exceeds almost 100 times to that of sodium. ठीक है, तो potassium is going to be a major role play. Okay, major role potassium is going to be playing in the resting membrane potential, and some amount of RMP is also contributed by the sodium potassium ATPase. Okay, so let's move on to the Gibbs-Jordan equilibrium, right? So what is this Gibbs-Jordan effect? So the Gibbs-Jordan effect says that whenever there are two solutions and there is a membrane, semi-permeable membrane separating those two solutions, right? So this effect is going to occur only when this solution contains some ions which are both. They could be diffusible ions or they could be non-diffusible ions. Okay? So in the presence of a non-diffusible ion, जो हमारे diffusible ions हैं, they're going to distribute themselves so that at equilibrium their concentration gradients are equal. Okay? So what do we mean by that? Let me just give you an example and just see that कि क्या mainly solutions हैं. So let's just assume there are two solutions. There is a solution A, solution B. Solution A has sodium 100 millimoles per liter and it has proteins 100 millimoles per liter. Fine, ठीक है? तो 200 हो गया हमारे यहाँ का osmolarity. Okay. And B solution has sodium 100 millimoles per liter. कोई फर्क नहीं पड़ा. And mainly chloride जो है यहाँ पे it is 100 millimoles per liter. ठीक है? तो इसकी molarity 200 है. यहाँ की molarity भी 200 है. तो दोनों के दोनों solutions एक membrane से separated है. But catch क्या है यहाँ पे? यहाँ पे sodium is permeable, it's a diffusible ion. Chloride is a diffusible ion. But what about proteins? Proteins cannot leave the cell membrane, right? तो proteins के लिए ना हमारे पास carrier channels हैं. तो protein is one ion which is non-diffusible. और इस non-diffusible ion से आगे क्या होगा? We'll be seeing that. ठीक है? दोनों की अगर osmolarity को अगर आप consider करो, दोनों की osmolarity are very similar. ठीक है? 200 over there. Okay. So what's going to happen? तो यहाँ पे there is 100, 100, 100, 100. What's going to happen is चाहे दोनों का यहाँ अभी right now this cell is at equilibrium. What do I mean by equilibrium? यहाँ पे अभी कोई electrical gradient नहीं है. ठीक है, चार्ज कितना है? जीरो चार्ज है. यहाँ पे कितना चार्ज है? जीरो चार्ज है. ओके, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट देयर. बट isn't there a gradient for chloride to move down its concentration gradient? Definitely there is. There is 100 here, there is zero chloride here, right? So this chloride is going to move into the solution number A, right? It's going to move down its concentration gradient, right? Whenever chloride does that and वो जब redistribute करेगा अपने आप को to A, what's going to happen is A now becomes selectively negatively charged, right? More of chloride is coming in here. So पहले sodium and जो proteins थे, they were 100 milliosmoles per liter. That is why they were cancelling out each other. But यहाँ पे chloride is coming in. Okay, chloride is coming in. So what's going to happen is A is going to become more electrically negative with regarding to B. Now it's going to pull the sodium as well. So what is happening is non-diffusible ions जो हैं हमारे, वो positively ions जो diffusible ions हैं उनके concentration को affect कर रहा है. So this effect is known as the Gibbs-Jordan effect. Okay, right. So this is the main thing. Now we come to something known as the Nernst equation. ठीक है, Nernst equation it says कि एक potential आएगा, that is the equilibrium potential. Also we call it as the Nernst potential, जहाँ पे एक ion का जो concentration gradient है and जो उसका जो electrical gradient है वो balance हो जाएगा, so that it will not move. It is different for every different ion and it depends upon what? So the Nernst potential that we calculate is minus RT by F natural log of sodium divided by sodium intracellularly divided by extracellularly, that is outside. Okay, so to not complicate all and getting into what is the R, that is the gas constant, or whether with what is T that we calculate, that is the temperature at Kelvin, or the Faraday's constant, or different stuff like that, we mainly come to one basic equation that we have is this one. So this is the equation that we have for calculating the Nernst potential. It is 61 by Z. What is Z? Z is the valency, right? Valency of that ion. For example, sodium के case में it is 1, calcium के case में it is 2, right? So this is the valency into log 10 concentration inside of that ion divided by the concentration outside of that ion. ठीक है? So this potential, that is the Nernst potential, इस पे electrical gradient और concentration gradient balance out होता है. ठीक है? So ये जो Nernst potential है हमने ऐसे calculate कर लिया, minus 61 by Z log of concentration inside divided by concentration outside. Very easy to do as well. For example, let's just assume sodium. ठीक है?
Sodium के केस में what's going to happen is sodium, is it present inside more or outside more? It is present outside more, we know it. ठीक है? So what's going to happen is this whole product is going to become negative, and the concentration gradient जो होता है सोडियम के लिए, मतलब जब दोनों को हम डिवाइड करते हैं, concentration inside by concentration outside. What is concentration inside? It's about 14, and what is concentration outside? It is 146 milliequivalents. So when do we divide it? And the pura jo aayega, that's going to be about plus 61. Okay, it's going to come plus 61 because we know log of 10 is 1, right? So log of 10, or you can switch the sign over, it can become positive, then you can place outside upar divided by inside niche. Okay, if you're using a negative sign, then it will be inside divided by outside. So we are using this equation now. Okay, sodium ke case mein it's going to come 61 by 1 log this whole product is going to be 10. So log of 10, that is 1. So E ion in case of sodium is about 61. Okay, so that's the main thing. That is the Nernst potential. So this is the different ions, and accordingly we can calculate the Nernst potential. As you see, 14, and this is extracellular 142. The concentration gradient comes out to be 10. So logarithmic of 10. So it's going to be plus 61. Valency is 1, right? ऐसे we can calculate for potassium, but if you see potassium का concentration gradient is much more. So that is एक हमें already we have a premonition of some sorts कि potassium is going to influence the RMP more. Why? Because concentration gradient इतना ज़्यादा है इसका. This was 10. ठीक है, 142 by 14 is 10, but 140 by 4 is about 35. So it's like 3 times more of that. And even we have already talked, permeability for potassium is much more as compared to the permeability of sodium. तो ये तो हमें पता लग गया आज का जो main role है is going to be played by potassium. What about chloride? Chloride का, as you can see, it is coming out, Nernst potential is coming out to be minus 86, very close to the actual resting membrane potential. So MCQ ये आता है, which of the ion does not play a role in the genesis of the resting membrane potential? And the answer was chloride. उसमें सोडियम भी था, पोटेशियम भी था, क्लोराइड भी था, none of the above. So the answer was chloride, because chloride इतना ज्यादा रोल नहीं प्ले करता, because उसका Nernst potential ही उसके RMP जितना है. ठीक है? And we have for different ions, just remember calcium के लिए if you're doing any calculation, you have to take the valency to be as 2. So that is the main thing. ठीक है? So now what is this thing? Goldman-Hodgkin-Katz equation. Sometimes you also call it as the Goldman equation. Okay. So this GHK equation, scientists ने कहा different ions हैं. They might have different permeability. They might have different concentration gradients. तो हमें कैसे पता? Everything is not so simple कि sodium है, chloride है, potassium है, proteins है, and that is it. Many different ions are there. Chloride is there, potassium is there, sodium is there. सबका Nernst potential different है. सबका membrane permeability different है. सबका concentration gradient भी different है. कैसे calculate करें? What is the actual RMP of the cell? इसके लिए we have the Goldman-Hodgkin-Katz equation, which is nothing. It's an amalgamation कि सारे का Nernst potential due credit giving to the membrane permeability and concentration gradient of the ion, हमने Goldman-Hodgkin-Katz equation कर दी. What is it influenced by? It is influenced by the polarity, whether the charge is positive or negative. It is influenced by the permeability of the ion, and it is influenced by the concentration inside divided by outside. So this is the equation that you can see, very similar to the equation that we used previously for your Nernst potential. If you're taking this negative, inside ऊपर आएगा. ठीक है? And but we also saw कि chloride के case में we have to check the polarity in concentration as well. Chloride के case में outside ऊपर आएगा. ठीक है? So this is the only thing, and इसके accordingly we calculated. Okay? Just remember, at rest, because potassium was the main thing, at rest the membrane permeability for potassium is maximum. ठीक है? तो at rest the Goldman equation for potassium, जो Nernst equation है for potassium is going to equal the Goldman equation. ठीक है? At RMP. That is why RMP को mainly influence कौन करता है? Potassium करता है. ठीक है? So that is how we do it. Okay. Right. So let's move on to the next portion. तो अभी हमने we've discussed about the different concentration gradients and the membrane permeability, and उसके accordingly we were seeing according to the GHK equation. The next role is played by the sodium potassium ATP, sodium potassium pump. So an additional minus 4 millivolts is then contributed to the membrane potential by the continuously acting electrogenic sodium potassium pump. ठीक है? Why? Because 3 sodium है बाहर को फेंकता है, 2 potassium is taken inside. The coupling ratio is 3:2. So this ratio के accordingly we are already predicting कि membrane potential is going to be negative only. But how much that is contribute to the actual RMP? It is only minus 4 millivolts. What contributes maximum to the RMP? It is potassium. Because potassium का जो Nernst potential के accordingly whatever the Nernst potential that we calculate for potassium is minus 94 millivolts. We have to remember this, okay? And the actual RMP of the cell is minus 90 millivolts. Can you see कितना ज़्यादा pass है? ठीक है? So that is the main thing. So this is the sodium potassium pump. This is the structure of the sodium potassium pump. Sometimes it can be asked. Okay?
So this is a bigger alpha subunit and this is a beta subunit with there are some carbohydrate residues attached to the beta subunit. Okay. तो यहाँ पे binding sites we just have to see. बाहर की साइड को दो बाइंडिंग साइट्स है. देयर इज अ बाइंडिंग साइट फॉर पोटेशियम सो दैट 2 potassium is taken inside, and there is a binding site for obane. Okay, obane is a glycoside which inhibits sodium potassium pump, and obane family of drugs में से digitalis is also one. So digitalis, you remember that we use it in heart failure, right? Sodium potassium pump को inhibit करता है. Basically obane was the cardiac glycoside. Okay, तो जो obane है, obane binding site है, potassium binding site है, और अंदर की तरफ क्या है, sodium binding site है, and there is a ATP binding site, and obviously there is a ATPA subunit as well, which is going to break the ATP down into ADP plus 1 phosphate, and it's going to convert this chemical energy so that it can throw 3 sodium outside and take in 2 potassium inside. Okay, so this is the basic rule. So this is what is depicted over here as well. So let's move on to the role of chloride in RMP. We've already seen. In most cells, chloride does not influence resting membrane potential. Very important MCQ. Okay? Right? Why doesn't it do that? Because the concentration difference for chloride between ECF and ICF is brought about passively by the presence of membrane potential itself. Chloride कोई role नहीं play कर रहा है. Membrane potential is the one which is influencing chloride. Okay? And chloride का, if you actually calculate the equilibrium potential, you can calculate it according to your own as well. So chloride का, when you calculate the equilibrium potential, it comes equal to the RMP. Okay? So that is the main thing. Chloride does not play a role in the RMP. What plays? Potassium. Okay? So this is again one line MCQ often comes. RMP बताओ different cells के. You can note this now. Red cells के लिए it is -8 to -20 millivolts. ठीक है. Smooth muscle cells ये बहुत पूछते हैं. Smooth muscle cells के लिए it is -35 to -45 millivolts. Everything is in ranges, so you can remember the range as well. ठीक है. 40 अगर किसी कोई पूछे. Smooth muscle cell का 40. Pacemaker cells, that is in the SA node and the AV node. What about it? -55 to -60 millivolts. It fluxes. ठीक है. Change होता रहता है वो. We remember the HCN channels which were responsible for the pre-potential in case of SA node. वो खुद को generate कर सकता है ना, auto excitable cell है. तो उसका जो RMP है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है. -55 to -65 millivolts. Nerve के लिए बहुत important, -70 millivolts, and skeletal muscle के लिए very important, -90 millivolts. ठीक है. So this now let's move on to the action potential a bit now. So what is depolarization? क्या होता है depolarization? Depolarization का मतलब ये है कि -70 से you are making the membrane potential to become more positive. Depolarize कर रहे हो आप. Polarize वो already है. कितने पे? RMP पे, -90 पे. If you are making it move up, so that is known as depolarization. When it overshoots, मतलब 0 से जब वो प्लस की तरफ होने लग जाएगा, that is known as overshoot. ठीक है. जब वो वापस RMP की तरफ जाने लग जाएगा तो हम इसे क्या कहते हैं? Repolarization. And when it becomes even lower than the RMP, then that is known as hyperpolarization. Very easy. Okay? So these are some terms that are given, right? So now we move on to the potentials that we have. We have two types of potentials. We have electrotonic potentials and we have action potentials. Difference क्या है? Electrotonic potential, they're also known as graded potentials. ठीक है? वो सिर्फ एक local change है in the amplitude and duration of a electrical current. But इनका मेन कैच क्या है? दे आर डेक्रीमेंटल. मतलब दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट प्रोपगेटिवली. जो हम एक्शन पोटेंशियल के साथ वर्ड यूज करते हैं, प्रोपगेट करता है एक्शन पोटेंशियल. इसका मतलब क्या है? इट डज नॉट अंडरगो डिक्रीमेंटेशन. उतना ही रहेगा एक्शन पोटेंशियल. बट इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल्स क्या है? दे आर कंडक्टेड डेक्रीमेंटली. ठीक है. वन इंपॉर्टेंट थिंग, क्या इसके लिए इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल के लिए कोई थ्रेशोल्ड है? नहीं, देयर इज नो थ्रेशोल्ड. ओके. And the second thing, there is no refractory period for a graded potential as well. Important MCQs. So how does it differ from an action potential? Conducted decrementally, no threshold, no refractory period. What about the action potential? All or none phenomena. या तो the cell is going to fire or the cell is not going to fire. Either the action potential is generated or it will die down as an electrotonic potential. उस वो न्यूरॉन को या फिर सेल को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा वो कहाँ से different threshold लेके आए. तो does the action potential have a threshold? Definitely it does have a threshold. Will it have a refractory period? Yes, it does have a refractory period. So they हमारे differences हो गए. ठीक है. Right. So now we move on to कि जो graded potentials हैं, why are they so decremental? Let's just study that. दो reasons. Current leak. ठीक है. तो जो positive ions जो अभी अंदर आए हैं, they are leaking out of the cell across the membrane. जैसे depolarization move कर रही है across the cytoplasm, ये सब के सब move कर रहे हैं outside. So that is why it is decremental. वो अपने आप die down कर जाता है. In opposite to a action potential. And what about the cytoplasmic resistance? Definitely, cytoplasm खुद भी अपने आप को एक resistance provide करेगा ना to the flow of electricity, right? इसके लिए we are going to produce myelin. Myelin is a very good insulator of electricity. उसके through will discuss something known as saltatory conduction. कि वो कैसे nodes of Ranvier के long travel करते हैं so that we reduce that amount of electrical resistance. ठीक है? वो we are going to discuss it very frequently. अभी थोड़ी देर में करेंगे. But graded potential, just remember, current leak और cytoplasmic resistance के कारण they are decremental. Fine.
सो व्हाट अबाउट द ग्रेटर पोटेंशियल्स? जितना जितना आप स्ट्रेंथ दोगे, जितना स्टिमुलस स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है? सो द ग्रेटर द स्टिमुलस स्ट्रेंथ, द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रेटेड पोटेंशियल टिल इट रीचेस द थ्रेशोल्ड। जैसे वो मान लो थ्रेशोल्ड पे आ गया यहाँ पे -55 पे, तो वो एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। वो भी अभी वे नॉट डिस्कसिंग, ठीक है? अभी भी डिस्कसिंग कि अगर ग्रेडेड पोटेंशियल अगर है, जितना आप उसे स्टिमुलस स्ट्रेंथ दोगे उतना वो इंक्रीज करेगा, ठीक है? राइट। एंड व्हाट अबाउट समेशंस? दो टाइप के समेशंस होते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंगली। वी हैव टेम्पोरल समेशन एंड वी हैव योर स्पेशल समेशंस, ठीक है? तो व्हाट इज दिस टेम्पोरल समेशन? टेम्पोरल समेशन का मतलब ये है डिफरेंट डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल्स आर कमिंग इन वेरी लेस सेपरेटेड बाय टाइम, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू समेट ऑन देयर ओन। सो ऐसे ऐसे हर जो ये ग्रेडेड पोटेंशियल है एक दूसरे में मर्ज करके दे रीच द थ्रेशोल्ड एंड माइट फायर एन एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल समेशन। व्हाट अबाउट स्पेशल समेशन? डिफरेंट डिफरेंट डेंड्राइट्स जो कि यहाँ पे साइनाप्स बना रहे हैं, और वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट एक्सॉन्स आर मेकिंग अ साइनाप्स, एक्सोडेंड्रिटिक साइनाप्स है जो भी है, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट सेल बॉडीज आर मेकिंग अ साइनाप्स, सारों में से अगर एक्शन पोटेंशियल एक ही टाइम पे आ गया, ठीक है, डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम डिफरेंट एक्सॉन्स आर टर्मिनेटिंग ऑन टू अ सोमा, ये सबके सब मिलके दे गोइंग टू मेक the membrane potential to go positive, might even go positive beyond the threshold and fire an action potential. तो इसे हम कह देंगे spatial summation. This is happening in space, whereas this is happening in, this is temporally happening, मतलब time के accordingly this is happening, ठीक है? So दो टाइप के हमारे summations हो गए, all right, ठीक है जी। Next, we move on to this again, a very important stuff as well. हम जब बात करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल की ना, तो परमिबिलिटी फॉर पोटेशियम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे मैक्सिमम होता है, दैट इज व्हाई आरएमपी कौन इन्फ्लुएंस करता है? पोटेशियम करता है। एज वी मूव ऑन डीपोलराइजेशन, तो ये क्या है? डीपोलराइजेशन हो रहा है। जैसे जैसे डीपोलराइजेशन होगा ना, परमिबिलिटी फॉर सोडियम इज गोइंग टू बिकम पॉसिबल मोर एज कम्पेयर टू द पोटेशियम, और जब वो इवन मोर देन पोटेशियम अगर बन जाएगा, देन ओनली इट विल फॉर फायर एन एक्शन पोटेंशियल। And what about repolarization? As the membrane potential is decreasing, the permeability of sodium also decreases. ठीक है? And again we reach the RMP. RMP पे क्या होगा? The permeability for potassium is again going to overshoot the permeability of the sodium. That is why it is going to influence the RMP. ठीक है? Just remember one more thing. With increasing depolarization, जैसे जैसे हम depolarization increase करें, मतलब फॉर एग्जाम्पल थ्रेशोल्ड इज एट -55, हम -40 पे गए, -20 पे गए, मतलब वी आर इंक्रीजिंग द डिपोलराइजेशन। सोडियम का देखना क्या होगा, एक पोर्शन तक, मानो 0 तक सोडियम की जो परमिबिलिटी वो इंक्रीज करेगी, बट व्हाट लेटर, उसके बाद क्या होगा, द परमिबिलिटी फॉर सोडियम इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है? मतलब जो मतलब सोडियम के केस में पहले इनवर्ड करंट आ रहा है, दिस जो नीचे की तरफ आना है इज इनवर्ड करंट इनटू द सेल, एंड ऊपर की तरफ जाना है इज आउटवर्ड ऑफ द सेल, बाहर जाना सेल से। तो एक पोटेंशियल तक, 0 तक परमिबिलिटी फॉर सोडियम इज गोइंग टू इंक्रीज, बट उसके बाद इट्स गोइंग टू डिक्रीज, बट दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम देखो जितना जितना हम पॉजिटिव जा रहे हैं बहुत स्लोली राइज कर रहा है, सोडियम वॉज वेरी क्विक टू राइज। तो वाई आई एम टेलिंग यू दैट, जो ये लेट आउटवर्ड करंट आता है दैट इज ड्यू टू पोटेशियम, ठीक है? जो बाहर की तरफ पोटेशियम के थ्रू जो बाहर जा रही है सेल से, जो भी पोटेशियम जा रहा है, दैट इज वेरी लेट बिकॉज दीज चैनल्स आर स्लो टू ओपन, वेयर एज सोडियम चैनल्स आर वेरी फास्ट टू ओपन, ठीक है? यही बस हमारा मेन वो है, that is the main point of discussing this. So this is the action potential, you can see it, what is happening. तो resting membrane potential पे है, यहाँ पे एक threshold आएगा, this is also known as the firing stimulus, different names हैं इसके, firing stimulus of the threshold. तो once that threshold is reached, -55 millivolts we consider it, इसके बाद क्या होगा, the sodium channels are going to open, यहाँ पे permeability of sodium क्या हो रही है, increase हो रही है, as soon as it becomes 0, यहाँ पे the maximum है permeability for sodium, permeability of sodium is maximum at 0, but what next, जैसे उसने ओवरशूट किया +30 तक गया, नाउ इट्स गोइंग टू डिक्रीज फर्दर। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। क्यों होगा वो, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे इनएक्टिवेशन होगा ऑफ द सोडियम चैनल्स विद इंक्रीजिंग डिपोलराइजेशन, एंड जैसे वो रिपोलराइज करे पोटेशियम की कंडक्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज अभी हमने पीछे देखा पोटेशियम की कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डिपोलराइजेशन, जितना ज्यादा डिपोलराइज करेगा उतना ज्यादा पोटेशियम की कंडक्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। So this is what's happening. So you're going to have depolarization, repolarization. It's going to reach the RMP. Sometimes potassium channels are very slow to close as well. तो कभी कभी ओवरशूट कर जाएगा आरएमपी को नीचे की तरफ, आई शुड नॉट यूज द वर्ड ओवरशूट, बट इट्स गोइंग टू बिकम इवन मोर नेगेटिव देन द आरएमपी, तो उसे हम हाइपरपोलराइजेशन करेंगे। क्यों? बिकॉज पोटेशियम चैनल्स आर वेरी स्लो टू ओपन, दे आर स्लो टू क्लोज, जस्ट लाइक कैल्शियम चैनल्स, ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग, वी गोइंग टू हैव अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वी गोइंग टू हैव अ डिपोलराइजिंग स्टिमुलस, जिसे हमने फायरिंग स्टिमुलस भी कह दिया, मेम्ब्रेन डिपोलराइजेस टू थ्रेशोल्ड, रैपिड सोडियम एंट्री होगी, इट्स गोइंग टू डिपोलराइज द सेल। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सोडियम चैनल्स आर गोइंग टू क्लोज वेरी फास्ट, ओपन भी जल्दी करेंगे, क्लोज भी जल्दी करेंगे, बट व्हाट अबाउट द स्लोअर पोटेशियम चैनल्स, वो बाद में ओपन करेंगे, और यही तो नेचर ने दिया है।
अगर पोटेशियम चैनल्स वर वेरी फास्ट वी वुड नॉट हैव जनरेटेड एनी एक्शन पोटेंशियल, बिकॉज जैसे सोडियम चैनल जनरेट होते वैसे ही पोटेशियम चैनल भी एक्टिवेट हो जाते, एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट नहीं होता। नेचर ने यही फैसिलिटेट किया कि भाई एक तुम्हारी लिम जो है वो सोडियम की है, very quick to open, that is why depolarization is happening. Potassium is very slow to open, that is why बाद में repolarization होगा, ठीक है। दोनों एक वेलोसिटी के नहीं है मेनली, ठीक है। एंड देन वी हैव डिस्कस द एक्शन पोटेंशियल एज वेल। सो दिस इज फ्रॉम एकेजेन। एकेजेन में थोड़ा सा डिफरेंट है मेनली, यू कैन रेफर दैट एज वेल। आई वुड नॉट से आप इसे फॉलो करो मेनली, बट मेनली वी हैव डिस्कस व्हाट इज गिवन इन GNOM, ओके, यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल। नाउ one more thing, last thing, regarding feedback. One MCQ that I saw was regarding feedback system. They asked positive feedback के examples हो, and sometimes एक MCQ में था Hodgkin cycle. So what is that Hodgkin cycle? What we were talking about? It's a positive feedback mechanism. क्या है वो? Threshold stimulus आता है, we say depolarization होता है membrane का. It's going to open the sodium channels. Well and good. Membrane permeability of sodium is increasing. Well and good. Sodium comes into the cell. Well and good. इससे क्या होगा? जितना ज़्यादा सोडियम आएगा, depolarization भी तो increase करेगा. And what was the thing that was opening the sodium channels? It was depolarization. So it's a positive feedback mechanism. Depolarization हुआ, sodium channels open हुए. Sodium channels open के होने के कारण फिर से depolarization is further exaggerated, and that is coming as a positive feedback loop. इस cycle को हम क्या कहते हैं? We call it as a Hodgkin cycle. तो fast positive cycle है ये. And what about the potassium ones? Potassium is opposite. उसका है slow negative cycle. मतलब potassium जब channels open होंगे, we're going to have repolarization, membrane permeability for potassium is going to increase, net positive charge is going to decrease, ठीक है। repolarization जैसे होएगा ना, potassium channels are going to close now, so it's a negative feedback mechanism over here. तो sodium के लिए it is a positive feedback which is required for generation of an action potential, and potassium के लिए it is a slow negative cycle. So fast positive and slow negative cycle. So this is the main thing, okay, right. So this is just remembering कि सोडियम जो है उसके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हेन वी आर डिस्कसिंग एंटी रिथमिक्स। उसमें हम थोड़ा एम गेट्स एंड एच गेट्स के बारे में बात करते हैं, कौन इनएक्टिवेटेड स्टेट में बाइंड करेगा, कौन आरएमपी पे बाइंड करेगा, कौन एक्टिवेटेड स्टेट पे बाइंड करेगा। तो उसके लिए जस्ट वन और टू लाइंस अबाउट दैट। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के एक्टिवेशन, दो टाइप के गेट्स है हमारे पास सोडियम चैनल के लिए। एक एक्टिवेशन गेट है बाहर की तरफ, देयर इज अ, इट्स आल्सो नोन एज एन एम गेट, और एक अंदर की तरफ देयर इज एन इनएक्टिवेशन गेट आल्सो नोन एज एन एच गेट, ठीक है। सी एट आरएमपी व्हाट इज दैट? RMP पे activation gate is closed, but the inactivation gate is open. Sorry for the disturbance. Abhi we are discussing about the sodium channels, right? So whenever the activation gate is closed, but the inactivation gate is open, तो इस state को हम कहते हैं resting state, okay? Now what's going to happen? जैसे जैसे depolarization होएगा, अब वो active हो जाएगा, तो हम कहते हैं activated state क्या है? M gate is also open and the H gate is also open. H gate तो पहले ही open था. And what is known as the inactivation state? Inactivated वो तब होएगा with rising depolarization, हम कहते हैं ना सोडियम अंदर की तरफ आता है, it gets converted to an aqueous state, और इसके थ्रू ये facilitate कराता है कि सिर्फ सोडियम अंदर आए. And obviously it also depends upon the pore diameter as well, but this is something like it was given in it was given in guidance, so I mentioned it कि selectivity filter क्या है. What about the potassium? Potassium के पास ऐसा कुछ नहीं है, एक simple सा gate है, या तो वो open है या closed है. Mainly inactivation gates और activation gates का चक्कर is only with sodium, ठीक है. So this is again we are seeing कि membrane permeability if you see, so this is what conductance, ठीक है। permeability का एक वो हो गया conductance in terms of the current. Sodium के लिए it increases while at the peak of the action potential, whereas potassium का जो conductance है वो बहुत slow to rise है, right? It rises but बहुत later on to as compared to sodium, ठीक है। It's a slow negative cycle, okay. Now वेरी इंपॉर्टेंट दो ब्लॉकर्स हैं फॉर योर सोडियम चैनल। सोडियम चैनल के केस में जो हम स्टडीज करते हैं बेसिकली इज बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल। जब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, दैट इज बाय टेट्रोडोटॉक्सिन, इट्स एन एमसीक्यू। एंड फॉर ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल्स वी हैव टेट्राइथाइल अमोनियम आयन। एंड व्हाट अबाउट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस? ऑब्वियसली इट वाज ओबेन, ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफेक्ट ऑफ अदर आयंस ऑन द आरएमपी, ठीक है। सो मान लो सोडियम बाहर का डिक्रीज हो गया, सो देयर इज हाइपोनेट्रीमिया। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 10 था, मतलब 14 अंदर था, 146 और 142 सोडियम वाज आउटसाइड, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाज 10। आरएमपी हमारा एन एक्शन पोटेंशियल उससे हम जनरेट कर रहे थे, सोडियम वाज कमिंग इनसाइड मोर। सोडियम में अगर बाहर डिक्रीज हो गया इन द ब्लड, हाइपोनेट्रीमिया, तो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन क्या होगा एंड एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डज इट प्ले अ रोल ऑन RMP? No, it doesn't. Sodium does not play a role on RMP. Chloride does not play a role on RMP. What plays a role on RMP? हमारा पोटेशियम और सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है।
Right, very important. That is the reason why जब हम local anesthetics दे there's sodium channel blockers because they decrease the propagation of this action potential. ठीक है, done. Very important. एक भी ये भी पूछते हैं, very important question, favorite question for physiology teachers if you are in your first year. Hypocalcemia technique कैसे कराते हैं, right? How does it do that? So whenever there's a decrease in the extracellular calcium, ठीक है, so what's going to happen is it decreases the amount of depolarization necessary to initiate the changes in sodium and potassium conduction. ठीक है, जितना थ्रेशोल्ड चाहिए था उसे डिक्रीज कर देता है by unknown mechanisms. But just remember, whenever there's a decrease in the extracellular calcium, it increases the excitability of the cell. How? Because it decreases the amount of depolarization of the threshold that is needed for propagation of an action potential. ठीक है, that उसके लिए we have spontaneous discharges, this is called as a technique. ठीक है, hypocalcemia. एंड हाइपरकैल्सीमिया क्या करता है, ऑपोजिट इफेक्ट. ठीक है, यहाँ पे डिपोलराइजेशन का वो नीड कम कर रहा था, यहाँ पे ज्यादा कर देगा, मतलब इट्स अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर. डू यू रिमेंबर हाइपरकैलीमिया में what do we use as a membrane stabilizer is going to become more negative, or we can say the neurons are going to become hyperpolarized, and the opposite will happen in case of hyperkalemia. It will make the cell more excitable, generate more cases of arrhythmias. That is why we use calcium gluconate as a membrane stabilizer. Okay, hope that's clear. Now we move on to the properties of an action potential. दो चार यहाँ पे भी क्वेश्चंस हैं. Something known as the Rio base. So what is this Rio base? Rio base is the minimum intensity of stimulus which is applied for a if applied for an adequate amount of time produces an action potential. The main focus is on the minimum intensity of the stimulus. ठीक है, उसे हम कहेंगे Rio base, and जितने टाइम में वो लगेगा that is known as the utilization time. What about the chronaxy then? Chronaxy is कि अगर हम twice the amount of Rio base apply करें, क्या utilization time decrease हो सकता है, कितना decrease हो सकता है, that is known as chronaxy. मतलब it is the minimum duration that you can achieve if you apply double the Rio base intensity. उसे हम कहते हैं chronaxy. This is Rio base, this is chronaxy. As you can see diagrammatically, तो ये क्या है हमारा, this is the Rio base. ठीक है, कितना minimum amount of stimulus यहाँ से increase हो रहा है, ठीक है, कितना minimum amount of stimulus applied for appropriate amount of time, जिसे हम utilization time कहते हैं, उसके कारण हमें क्या मिलने लग गया, वहां पे हमें action potential मिलने लग गया, इसे हम कहते हैं Rio base. एंड व्हाट इज chronaxy? अगर हम डबल द अमाउंट ऑफ रियो बेस अप्लाई करें, मतलब ये है तो यहाँ पे डबल कर दिया हमने, 2 आवर कर दिया, तो कितना अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम हमें लगेगा टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, कितने टाइम तक हम वो करंट स्टिमुलस दें जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए. इफ यू अप्लाई डबल द रियो बेस इंटेंसिटी, उस टाइम को हम chronaxy कहते हैं. ठीक है, सो रियो बेस एंड chronaxy. व्हाट अबाउट द ऑल और नॉन रिस्पॉन्स? मतलब सिंपल है, अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ एक्शन पोटेंशियल फायर करेगा, वरना वो नहीं फायर करेगा. दैट इज नोन एज द ऑल और नॉन रिस्पॉन्स. ठीक है, ठीक है जी. तो वी हैव डिस्कस दिस. सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो क्या है, इट बेसिकली बिकम्स अ ग्रेडेड पोटेंशियल, आल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल, एंड क्या होगा, वो डेक्रीमेंट कर जाएगा. ठीक है, जितना जितना आप इंक्रीज कर रहे हो. थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हो गया, क्या होएगा, इंक्रीज करेगा. सुप्रा थ्रेशोल्ड हो गया तो भी क्या होएगा, उतना ही करेगा. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, जितना जितना आप स्टिमुलस इंक्रीज करते हो उससे एक्शन पोटेंशियल का जो ये हाइट है ना, ये एम्पलीट्यूड है, ये नहीं चेंज होएगा. क्या चेंज हो सकता है, एक चीज, दैट इज द कितने एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट, what is the frequency of the action potential generating per minute. So if someone asks you, अगर मैं ज्यादा स्टिमुलस से अप्लाई करूं एनी नर्व पे कोई भी स्टिमुलस, क्या एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, नहीं. एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड इज नॉट गोइंग टू चेंज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल फायरिंग इज गोइंग टू चेंज. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव पीरियड पे आते हैं, तो दो टाइप के रिफ्रैक्टिव पीरियड है. यू हैव द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड यू हैव द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. Absolute refractory period क्या है, we term this depolarization plus the initial 1/3 of the repolarization is known as the absolute refractory period. इस टाइम पे कुछ भी कर लो, जितना मर्जी स्टिमुलस दे दो सेल को, सुप्रा थ्रेशोल्ड जो भी देना है दे दो, द सेल इज नॉट गोइंग टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल अगेन. पहले वो पूरा का पूरा आगे जाएगा, देन ओनली इट इज गोइंग टू, मतलब इस टाइम पे इट इज एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टरी, जितना मर्जी स्टिमुलस दे दो. व्हाट अबाउट द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के टाइम पे इफ यू प्रोवाइड सम थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से थोड़ा ऊपर स्टिमुलस दोगे ना, सुप्रा थ्रेशोल्ड अगर दोगे, वो फिर से एक्शन पोटेंशियल फायर कर जाएगा. तो ऐसा क्या हुआ कि हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड मिल रहा है? सिंपल आंसर, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन. जैसे जैसे डिपोलराइजेशन हमने देखा था, 0 तक मेम्ब्रेन परमिबिलिटी फॉर सोडियम वाज इंक्रीजिंग, उसके ऊपर मेम्ब्रेन परमिबिलिटी फॉर सोडियम वाज डिक्रीजिंग ड्यू टू सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन. तो अभी भी when the cell is repolarizing, the sodium channels have still not opened up in this period, that is the absolute refractory period. बाद में जाके ऐसा टाइम आएगा जब सोडियम चैनल्स ओपन होने लग जाएंगे, उसे हम कह देंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, जहां पे अगर आप एक और थ्रेशोल्ड, सुप्रा थ्रेशोल्ड अगर आप इंटेंसिटी दोगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा. ठीक है, सो टू रीजंस क्या है. Once the voltage gated sodium channels are triggered to open at threshold, they cannot open again in response to another depolarizing triggered event. Why?
because they are inactivated. When do I mean by inactivated? मतलब the H gate is closed. ठीक है, H gate is closed. ठीक है. So the relative refractory period begins at the end of the absolute refractory period and overlaps primarily with the period of the hyperpolarization. During this period, it is possible to generate a second action potential, but एक stimulus stronger लगेगा than the threshold to reach the same amount of threshold. ठीक है? So this is the differences between absolute refractory period and relative refractory period. You can refer to it. कितना मैंने बताया? 1/3 of the repolarization. ठीक है? And this is remainder of the repolarization and the hyperpolarization phase. Important. ठीक है? So this is again diagrammatically we are seeing absolute refractory and the relative refractory period. ठीक है? Why? Because यहाँ पे relative से देखो sodium channel inactivated कितने almost 100% reach हो रहा है भाई. इस time पे तो it is not going to fire another action potential very soon enough. Now इतना होएगा that the amount of sodium channel inactivated are going to decrease as the cell is going to repolarize. Now if you provide some amount of supra threshold stimulus, वो फिर से it's going to fire an action potential. तो अब वो आ जाएगा relative refractory period वाली state में. This was the absolute refractory period वाली state में जहाँ पे इतने ज़्यादा sodium channel inactivated it cannot produce an action potential. ठीक है? So this is the thing. Okay. Next we move on to the frequency coding. We have seen कि जितना जितना हम स्टिमुलस इंटेंसिटी में वेरी करता है उसके अकॉर्डिंगली अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो एक्शन पोटेंशियल नहीं फायर करेगा. थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ गया, एक्शन पोटेंशियल फायर होने लग गया. जितना इतना सुप्रा थ्रेशोल्ड, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है. जितना ज्यादा बढ़ रहा है, क्या चीज चेंज हो रही है? इफ यू सी हाइट दोनों की सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, एक चीज चेंज हो रही है. व्हाट इज दैट? फ्रीक्वेंसी. So that is the main thing. Frequency coding हम इसे कहते हैं कि how action potential convey the intensity of stimuli. They only increase in frequency, not in the amplitude. ठीक है. कंडक्टिविटी हमें पता है ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन होता है एंड एंटीड्रोमिक कंडक्शन होता है. व्हाट इज दिस ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन? मतलब सेल बॉडी से नर्व टर्मिनल या एक्सॉन की तरफ जाना, जिसे हम टर्मिनल बाउटॉन भी कहते हैं, उसकी तरफ जाना. साइनेप्टिक नॉब, टर्मिनल बाउटॉन, all of them are reciprocal terms. Same terms, sorry, not reciprocal. व्हाट अबाउट एंटीड्रोमिक कंडक्शन? उनका ऑपोजिट है. ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट. मतलब कि टर्मिनल बाउटॉन से ऊपर की तरफ एक्सॉन की तरफ आना, उसे हम कहते हैं एंटीड्रोमिक कंडक्शन. ठीक है, तो दो टाइप के कंडक्शन होते हैं, ऑर्थोड्रोमिक एंड एंटीड्रोमिक. ओके, राइट. ठीक है. So what is this? We are discussing the properties of the action potential. हमने all on and response किया, हमने refractive period के बारे में डिस्कस किया. Now we are going to discuss about the accommodation. ठीक है, accommodation क्या है? बहुत strange से phenomena है. When a nerve is depolarized very slowly, बहुत slowly आप nerve को depolarize कर रहे हो, the normal threshold may be passed or still action potential will not fire. इस phenomena को भी call it as accommodation. ठीक है, इतना ही हमें याद करने की जरूरत है. We are only discussing the properties. We're not going on to the molecular mechanism behind it. ठीक है, accommodation ये हो गया. These are the difference between a graded potential and action potential. You can go through the slides as well. We are slightly in some hurry. तो अभी हम आगे की तरफ जाएंगे. We've already seen about the Rio base and the chronaxy. हमने Rio base study किया, हमने utilization time देख लिया, and हमने chronaxy देख लिया. ठीक है. Now, okay. So now we move on to the classification of nerve fibers. वैसे it's a CNS वाला topic. We're just going to ऊपर से just brush upon it. ठीक है. तीन टाइप की we have classification. We have the Erlanger-Grasser classification, we have the Lloyd and Hunt, and we have the physioclinical classification. ठीक है. So what is the Erlanger-Grasser? It divides into A, B, C initially, and then A के further subtypes हैं alpha, beta, gamma, and delta. ठीक है. Alpha, beta, gamma, and delta. एक का बस you have to remember what do they do. What does alpha do? Alpha is mainly responsible for two things. You remember alpha motor neuron कहते हैं. कहाँ से आया वो? A alpha type of nerve fiber है वो. ठीक है. Alpha motor neuron is mainly supplied by the A alpha. इस करके मुझे alpha motor neuron कहते हैं. ठीक है. So A alpha mainly दो चीजें, voluntary motion, that is somatic motor fibers, and second thing is proprioception, very important. ठीक है. Second is A beta, touch fibers, pressure fibers. सबके सब are mediated by A beta nerve fibers, so touch and pressure. ठीक है. What about the A gamma? Okay. A gamma क्या कह रहे हैं? It is gamma motor neuron discharge सुना होगा, right? It mainly जो लोड कराता है मसल स्पिंडल को, गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज. ठीक है, जब हम कहते हैं कि वी इंक्रीज द गामा मोटर न्यूरॉन डिस्चार्ज, बेसिकली जंड्रासिक मैन्यूवर वगैरह से हम अपने रिफ्लेक्सेस को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं. वी रीइंफोर्स आवर रिफ्लेक्सेस, उसके अकॉर्डिंग वी ग्रेड द रिफ्लेक्सेस एज वेल. तो गामा मोटर न्यूरॉन इज मेनली टू मोटर टू द मसल स्पिंडल्स. इजी टू रिमेंबर. व्हाट अबाउट ए डेल्टा? ये तुम पढ़ते ही हैं. ए डेल्टा इज हमारे फास्ट पेन फाइबर्स. ठीक है, जिससे which is mediated by the neothalamic pathway, neospinothalamic. We have two types of nerve fibers, neo and paleo. Paleo मतलब पुराना, paleolithic area वाला. ठीक है. What about B type of fibers? Very important. ठीक है, यहाँ पे potential MCQ लाया हो रहा है. B ये सब पता होता है सबको. B is preganglionic autonomic. ठीक है, preganglionic mind you, preganglionic. C दो टाइप के चीजें कन्वे करता है. C हमें पता है टाइप C फाइबर्स. ठीक है,
मेनली पेन एंड टेम्परेचर, जिसे हम पेलियो कह रहे हैं, स्लो पेन फाइबर्स, डिफ्यूज पेन फाइबर्स, नॉट वेल लोकलाइज, ये सब सी मीडिएट कर रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट सिंपैथेटिक? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक इज सी टाइप ऑफ फाइबर्स. P ganglionic, any fiber, P ganglionic, autonomic fiber is B type of fibers. C में it could be post ganglionic sympathetic or it could be pain and temperature. A alpha के लिए proprioception somatic motor, A beta के लिए touch and pressure, A gamma के लिए motor to the spindles, and A delta के लिए pain and temperature. And how are they classified? They are classified in increasing. ऐसे increase हो रहा है. A alpha has the maximum fiber diameter, or you can classify them on the conduction velocity. ऐसे conduction velocity decrease हो रही है. ऊपर से नीचे conduction velocity are decreasing, and नीचे से ऊपर the fiber diameter is increasing. Obviously, है ना? Diameter जितना ज़्यादा होएगा, conduction velocity उतनी ज़्यादा होएगी. ठीक है? Now we move on to the next classification, जो थोड़ी numerical classification that was given by Lloyd and Hunt. ठीक है? इसके accordingly 1A हमारा क्या है? Mainly 1A is हमारे muscle spindle fibers, 1B हमारे GTO, Golgi tendon organ. ठीक है? 2 fibers are also mediating the muscle spindle as well as touch and pressure. 3 are for the pain and cold temperature, and 4 is again due to pain and cold temperature. तो इसके accordingly हम calculate, इसके accordingly we can also see कि हमारे जो लैंगर गैसर के अकॉर्डिंगली इसके कोरिलेट्स क्या हैं. ठीक है? तो 1A is basically A alpha, 1B is also again A alpha, 2 is हमारा A beta, and 3 is हमारा A delta, and 4 is हमारा C type of fibers. न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजियो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या है ये? दिस क्लासिफाई द नर्व्स, वही सेम ABC जो हमने यूज किए थे फॉर लैंगर गैसर, बट इट क्लासिफाइज देम अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर ससेप्टेबल टू हाइपोक्सिया, प्रेशर और लोकल एनेस्थीसिया. कैसे? ठीक है? लोकल एनेस्थीसिया का बहुत ईजी है. What do we give local anesthesia for? For pain. So सबसे ज्यादा sensitive कौन है? C. So most sensitive for local anesthesia is C, followed by B, followed by A. ठीक है? And do you remember pressure? Pressure का क्या है? Whether a person is experiencing some Saturday night palsy, या हम गलत तरीके से सो जाते हैं and हमारा मान लो, और we are sitting for a long time and हमारा पैर numb पड़ जाता है. Do we feel pain? If you try to pinch yourself उस टाइम पे ना, पेन तब भी relatively intact होता है, but you can't feel anything. मतलब numbness होती है. मतलब pressure के केस में it is A which is most sensitive, followed by B, followed by C. ठीक है? So this is ABC, local anesthesia के लिए CBA, and obviously एक जो रह गया हमारा, that is hypoxia के लिए it is BAC. ठीक है? So Miller's anesthesia. This is Miller's classification that we use for LA as well. Very important for anesthesiologist. Okay. So now we move on to the properties of the nerve fibers. We've already discussed much of the things about the properties of the nerve fiber, because property of nerve fibers and properties of action potential are very similar. Okay. So we're going to rush through that. So this is what we are talking about was the saltatory conduction. Okay. Saltatory conduction का मतलब ये है जहां जहां पे about accommodation as well, कि जैसे जैसे nerve depolarization, if the nerve is depolarized very slowly, तो normal threshold भी pass हो जाएगा और still action potential is not fired. उसे हम कहते हैं accommodation. ठीक है? All or none response we've already seen. एक चीज आती है सेफ्टी फैक्टर. जस्ट फॉर एन एमसीक्यू, सेफ्टी फैक्टर व्हाट इज दैट? जितना मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन इज अकरिंग एट अ नोड डिवाइडेड बाय द डिपोलराइजेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रिगरिंग द एक्शन पोटेंशियल. ठीक है? बस ये याद रखना है, whenever this ऊपर वाला न्यूमरेटर is more than the denominator, मतलब what is required से ज्यादा what is given अगर इंक्रीज हो जाए, मतलब सेफ्टी फैक्टर when it becomes more than 1, then obviously depolarization बेटा. बस इतना सा है सेफ्टी फैक्टर. ठीक है? ऑल इन नॉन रिस्पॉन्स के लिए. रिफ्रैक्टिव पीरियड वी ऑलरेडी स्टडीड. Nerve injury classification is more important in orthopedics, तो वहीं पे we are going to study. आज थोड़ा सा time we are having some shortage, and you might all be knowing about that as well. ठीक है? So right, so now we're moving on to the neuromuscular junction. Okay, NMJ की बात कर लेते हैं. And basically NMJ क्या है? It's a chemical synapse. So if you can see what is happening, ये हमारा axon terminal आ रहा है and it's going to terminate as an axon terminal. This is the axon terminal. इसका एक और नाम है, also known as a synaptic knob. Sometimes we also call it as a terminal bouton as well. ठीक है? Bouton भी कहते हैं कई बारी. So this is different terms used for the same thing. Axon terminal है. ठीक है? What's going to be there? यहाँ पे हमारा सार्कोलेमा है. What is the sarcolemma? It is the plasma membrane of the muscle. तो ये हमारा nerve हो गया, ये हमारा muscle हो गया. What is getting released here? Neurotransmitters like acetylcholine वगैरह release हो रहे हैं यहाँ पे. And यहाँ पे इन दोनों के बीच में distance है. Why? It's also known as a synaptic cleft, because ये क्या है? It's a chemical synapse. ठीक है? केमिकल साइनैप्स का मतलब ये है, यहाँ पे इसके न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, यहाँ पे इसके रिसेप्टर होंगे, दोनों के बीच में 20 to 40 नैनोमीटर्स का गैप होएगा. एंड इस कंडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले लगेगा. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल साइनैप्स, और वी कैन से नर्व मसल जंक्शन की बेसिकली ये प्रॉपर्टीज है. ठीक है? राइट. सो दिस इज अगेन इलैबोरेटेड द सेम थिंग. यहाँ पे हमारी न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज हमारा जो अंदर की तरफ जो अंदर जा रहे हैं, दैट इज योर टी ट्यूब्यूल्स. ठीक है? And we have this thing over here. Now this is the receptor that we are talking about right now.
the nicotinic acetylcholine receptor. NACHR, nicotinic acetylcholine receptor. This is the receptor that we are talking about. यहाँ पे कौन सी subunits do we have? We have alpha, gamma. We have two alpha subunits. ठीक है? We have beta, gamma, and delta. ठीक है? Where does acetylcholine bind? Acetylcholine binds between A delta, A alpha and delta, and it binds between alpha and gamma. तो यहाँ पे दो binding sites है acetylcholine की. And sometimes we use succinylcholine. Succinylcholine एक basically dimer लगा लो acetylcholine को, दोनों sides को block, दोनों sides को occupy कर देता है, so that acetylcholine is not able to act, right? So that is why उसे हम क्या कहते हैं? We call it as a muscle relaxant. That is succinylcholine. दोनों binding sites, alpha delta के बीच में and alpha gamma के बीच में वो bind कर लेगा, right? So what is going to happen now? And we have two syndromes, you know, Lambert-Eaton myasthenic syndrome, LEMS, ठीक है? And we have myasthenia gravis. LEMS में हमारा basically voltage gated calcium channels जो यहाँ पे present है, उसके against we have a antibody. And myasthenia gravis के case में we have antibodies to the nicotinic acetylcholine receptors, ठीक है? Now, what about tetanus toxin? एक minute, पीछे की तरफ. If we move on to here and let's just study what actually happens, right? Whenever the action potential comes over here, it's going to increase the membrane potential. जैसे the membrane potential is going to increase, यहाँ पे we are going to have voltage gated calcium channels, okay? These voltage gated calcium channels are going to open once the membrane depolarizes. Calcium is going to come inside. और यहाँ पे हमारा hero जो है वो calcium है, ठीक है? RMP के केस में पास potassium. Calcium के केस में वी स्टडीड कैल्शियम दो चीजें कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सोसाइटोसिस, राइट? यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस वो मीडिएट कैसे करा रहे हैं वो हमने देखना है. बेसिकली टू कट द होल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली कैल्शियम जो है इट बाइंड्स टू सम प्रोटीन्स नोन एज स्नेयर्स, ओके? इफ यू हैव टू बी स्पेसिफिक, एक स्नेयर याद रख लो, साइनाप्टोटैगमिन, ओके? इट बाइंड्स टू दिस साइनाप्टोटैगमिन. व्हाट आर दीस स्नेयर्स प्रेजेंट? स्नेयर्स मतलब यहाँ पे जो हमारा वेसिकल है, यहाँ पे इसके स्नेयर्स हैं, और यहाँ पे हमारा जो ये मेम्ब्रेन है यहाँ पे भी स्नेयर्स हैं. So these snares are going to interact with each other, and this vesicle is going to dock. It's going to dock at the terminal membrane, and it's going to release its neurotransmitter contents. ठीक है? ये जो पूरा process है, it is mainly mediated by calcium. तो ये जो snares हैं, right? Just remember, tetanus toxin we all know is a relaxant. Muscle को relax करता है वो. It mainly जो wrinkles के case में या फिर in case of like torticollis or something like that, we use tetanus toxin that is relaxant. कैसे करेगा वो relaxant? Because tetanus toxin जो है ना, sorry, not tetanus, we are talking about botulinum toxin. Oh, sorry. So botulinum toxin is basically a protease, okay? It's a enzyme which functions as a protease, मतलब it's going to break some peptide or something. And which peptide does it break? It breaks snares, ठीक है? Botulinum toxin breaks snares. तो इसके कारण जो वेसिकल है वो मेम्ब्रेन पे डॉक नहीं होगा, इसके कारण we are having muscle relaxation. Tetanus on the other hand, what is tetanus doing? It basically targets the inhibitory synapses जो कि glycine और GABA रिलीज करते हैं at the inhibitory interneuron present in the spinal cord, ठीक है? तो whenever those are inhibited, inhibition is inhibited मतलब alpha motor neuron फायर करने लग जाएंगे and they're going to produce spastic paralysis, ठीक है? Spasticity या muscle rigidity tetanus produce करते हैं, whereas botulinum toxin does the exact opposite, ठीक है? Just remember, जो ये vesicles हैं, they are prepared in the cell body. Some of these vesicles are prepared in the cell body. तो वो सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल पे कैसे आएंगे? थ्रू समथिंग नोन एज मॉलिक्यूलर मोटर्स, ठीक है? ये जो मॉलिक्यूलर मोटर्स हैं बड़े फैंसी होते हैं. तो दीज हाउ डू दे वर्क? यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है? माइक्रोट्यूब्यूल इज वन ऑफ द थिंग दैट पार्टिसिपेट्स इन द साइटोस्केलेटन, ठीक है? राइट. So we were talking about molecule. Opposite will happen with the case of dynin. Dynin इसे negative end की तरफ लेके जाएगा, and kinesin इसे positive end की तरफ लेके जाएगा. And you would not believe, myosin is also a molecular motor, ठीक है? बट उसके केस में जो साइटोस्केलेटन है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं होगा. That will not be microtubule, it will be your microfilament जिसे हम एक्टिन कहते हैं, ठीक है? तो एक्टिन इन केस ऑफ मायोसिन, काइनेसिन पॉजिटिव एंड की तरफ लेके जा रहा है एंड डायनिन ऑपोजिट एंड की तरफ लेके आ रहे हैं. देयर मॉलिक्यूलर मोटर्स, देयर कैरिंग द साइनेप्टिक वेसिकल्स ऑन देयर बैक. सो ये है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है? राइट. So right, let me just see how many slides are left, how much we have covered. All right. So let's just first discuss about synapses, then we'll move on to the muscle, and maybe that will be the last topic that we covered today. We are short of time already, so let's just discuss something about synapses, okay?
So we've already seen the neuromuscular junction, and so it was a chemical synapse. So we have two types of synapses. We have a chemical synapse and we have a electrical synapse. ठीक है, अभी तक तो हमने देख लिया chemical synapse we have studied. What about a conjoined synapse? Conjoined synapse मतलब it is both electrical and chemical both. That is known as a conjoined synapse. ठीक है. So what are the electrical synapses? Electrical synapses means तो दोनों के जो membranes हैं, that is pre-synaptic and post-synaptic neurons, they've come together. बहुत कम गैप रह जाता है दोनों के बीच में, and we have these structures which are known as gap junctions. ठीक है. These gap junctions are made up of proteins which are known as connexins. They form a unit that is known as a connexon. तो आधा connexon जो है, जो basically आधा connexon is with one presynaptic membrane, आधा connexon is with some other postsynaptic membrane, and दोनों they form a bridge जिसके through you can transport anything, you name it. You want to transport iron, it's going to transport iron. You want to transport ATP, you can transport ATP through that as well. ठीक है. So these are low resistance bridges जिसके along transmission हो सकता है. And you know what kind of transmission that is. Chemical synapse के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर है. क्या उल्टा जा सकता है? It can't, because यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं है. Even if the receptor is there already, यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है. तो chemical synapses are usually unidirectional. But this is not the case in case of electrical synapses. Electrical synapses are bidirectional. मतलब यहाँ पे अगर एक membrane है, यहाँ पे एक membrane है, they're connected by a connexon. They can the ions can go here as well, ions can go here as well. So they're bidirectional. ठीक है. So this is what do I mean by that. दोनों के बीच में if you see the gap, it is almost 2 to 4 nanometers. कितना था in case of chemical synapse? About 20 to 40 nanometers. तो 10 times ये कम है. And यहाँ पे हमारे connexons हैं. And they are basically connexons के बीच में जो pore है 1 to 2 nanometer size का pore है. And these are these hemi channels which are connexons made up of connexin subunit. ठीक है. Connexin subunit है यहाँ पे बनता है. 6 connexins basically form one connexon. ठीक है. And what about chemical synapses? They're going to release a neurotransmitter, and this neurotransmitter is going to bind with the receptor, and that's going to generate any action potential or a gradient potential or something like that. But it's always going to be a one-way conduction, just like a neuromuscular junction. Okay, so this is what is happening. We talked about docking as well. So यही यहाँ पे main mechanism यहाँ पे हो रहा है. So we have different type of synapses as well. Synapses हमारे पास exodendritic synapse है. What is that? कि axon एक का आ रहा है और dendrite पे end कर रहा है. Most common is exodendritic. और we can have axon आ रहा है सोमा पे एंड करे, दैट इज एक्सोसोमैटिक साइनैप्स. ठीक है. और एक और है दैट इज एक्सॉन आ रहा है, एक्सॉन पे एंड करे, दैट इज एक्सोएक्सोनिक. तो 3 साइनैप्सेस, एक्सोडेंड्रिटिक, एक्सोसोमैटिक, एक्सोएक्सोनिक. समटाइम्स वी आल्सो कॉल वन एज एक्सोस्पाइनस बिकॉज ये डेंड्राइट्स के पास स्पाइन्स होती हैं. ठीक है. तो वहां पे वी कैन कॉल इट एज एक्सोस्पाइनस प्रोसेस एज वेल. ठीक है. ठीक है. सो दिस इज द अगेन दिस इज इलस्ट्रेटेड कि कौन कौन से टाइप के डिफरेंट साइनैप्सेस हैं हमारे पास. ठीक है. सो we have already talked about this कि ends of the presynaptic fibers are generally enlarged to form these terminal boutons जिसे हम knobs भी कहते थे, synaptic knobs. और ये जो presynaptic terminal था यहाँ पे membrane bound vesicles यहाँ पे which were containing these neurotransmitters. We already talked about that. बहुत important stuff आने वाला है. न्यूरोपेप्टाइड्स जो है हमारे, different न्यूरोपेप्टाइड की कोई भी, मान लो any neuropeptide neurotransmitter इस है, that neuropeptide is not synthesized in the terminal boutton. कहाँ synthesize हो रहा है? सोमा में synthesize होके वो axon के थ्रू जाता है, यहाँ पे एंड अप होएगा इंटर एक्सो जो हमारा टर्मिनल बाउटन है. यहाँ पे पहुंचा कैसे? वाया काइनेसिन. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द मॉलिक्यूलर मोटर, दैट इज काइनेसिन, जो इसे पॉजिटिव एंड की तरफ लेके जाएगी. तो जस्ट रिमेंबर, न्यूरोपेप्टाइड के ट्रांसमिटर्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल ऑफ द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूरोनल सेल बॉडी. So these transmitted vesicles जो है, they transported all the way to the tip of the nerve fibers by fast axonal transport. What do I mean by that? Molecular motors. ठीक है. The main thing, for example, एक हम देखें ऑक्सीटोसिन, राइट? ऑक्सीटोसिन इज वन ऑफ दिस काइंड, और वेसोप्रेसिन इट्स अ पेप्टाइड. बोथ ऑफ देम आर पेप्टाइड्स. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी सीन प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पोस्ट साइनेप्टिक सोमा से 20 to 40 नैनोमीटर्स के साइज पे के डिस्टेंस पे वो सेपरेटेड है. ठीक है. एक और चीज, जो वेसिकल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं. वी कैन हैव लार्ज डेंस वेसिकल्स व्हिच आर कंटेनिंग न्यूरोपेप्टाइड्स, और वी कैन हैव स्मॉल वेसिकल्स व्हिच आर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो लार्ज डेंस वेसिकल्स जो है वो पेप्टाइड्स हैं. ठीक है. और जो स्मॉल वेसिकल्स जो हैं, जो बेसिकली हमारे अमीनो एसिड्स हैं, फॉर एग्जांपल कैटेकोलामीन्स वगैरह हैं, या गाबा है, ग्लूटामेट, ऑल ऑफ दीस स्मॉलर स्टफ लाइक दैट. ठीक है. एन एंट्री ऑफ कैल्शियम ट्रिगर्स द एक्सोसाइटोसिस. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. So just saying, small clear vesicle है, small dense vesicle है, and large dense है. Large dense क्या हमारे न्यूरोपेप्टाइड्स. डन. स्मॉल क्लियर क्या है? एवरीथिंग एल्स, एसिटाइल कोलिन, ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट, ऑल ऑफ दीस. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट स्मॉल डेंस? एक एमसीक्यू, कैटेकोलामीन्स आर स्मॉल डेंस. So small clear are acetylcholine, glycine, GABA, glutamate. Small dense are catecholamines and large dense are your neuropeptides. ठीक है. इस केस में, इन दोनों के केस में जो वेसिकल है
दे आर रिसाइकल्ड, ओके। तो जो यहाँ पे वेसाइकल रिलीज होता है वो वापस इंटरनलाइज होकर आप फिर से उस वेसाइकल को भर सकते हो विद एनीथिंग। बट इन केस ऑफ लार्ज डेंस साइनाप्स, लार्ज डेंस वेसाइकल्स जो है, दीज आर नॉट रिसाइकल्ड, ये वेसाइकल गया तो गया, ठीक है। ठीक है, वन थिंग मोर, दैट इज एक्टिव जोन। समटाइम्स यहाँ पे हमारे स्नेयर फैसिलिटेटरी प्रोटीन्स होते हैं, दे नोन एज एक्टिव जोन्स। व्हाट आर दीज एक्टिव जोन्स? ये एक्टिव जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ पे कैल्शियम चैनल्स का मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, एंड दूसरा इट हैज सम स्नेयर रेगुलेटरी और स्नेयर फैसिलिटेटरी प्रोटीन्स लाइक मंच वगैरह, तो दे आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। So basically, what do they have? They have calcium channels and they have these snare regulatory or snare facilitatory proteins. This is known as the active zone. Okay, right. So what holds the two synapses together? There is something known as neurexins. Neurexins hold the two synapses together, as well as they play some role in the development of neuronal plasticity, synaptic plasticity, as well as embryology. Okay, तो वहाँ पे we'll study neurexins as well. Okay, ठीक है. So we've already seen this process. अब हमारे पास ये है कि once the vesicle के content are discharged into the cleft, how do we retrieve it back? दो pathways हैं, या तो endocytotic pathway है, which is mediated by clathrin, ठीक है, coated fit formation के through, ठीक है, और we can have a kiss and run discharge. What is that? कि synaptic vesicle जो है वो पूरा का पूरा discharge नहीं होएगा, एक small hole के through it will open into the postsynaptic membrane and then that is retrieved back. इसमें कोई हमें clathrin वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी. So that is the endocytotic pathway and the kiss and run discharge. ठीक है, right. So this is what we are talking about, the snare mechanism and docking. You just remember हमारे पास दो टाइप के snares है, V snares and T snares या membrane snares. यहाँ पे दो snares हैं, synaptobrevin and synaptotagmin, और यहाँ पे दो snares हैं, syntaxin and snap25. So all of these interact, they basically discharge the contents of the vesicle into the cleft, right? So this is what we talk about. And synaptotagmin का जैसे याद रखना है, यहाँ पे calcium bind करता है. And ये जो botulinum toxins हैं, basically इनमें से कोई ना कोई they're going to break, right? And that is why they mediate muscle relaxation. So what does SNARE stand for? Just remember, it is soluble N-ethylmalamide sensitive protein attachment protein receptor. ठीक है, so this is a big thing, you can remember it. Soluble N-ethylmalamide sensitive fusion protein. ठीक है, SNARE. Okay. So this we are talking about endocytotic pathway की वेसाइकल डिस्चार्ज हो गया, अब उसे अंदर कैसे लें? Via clathrin. ठीक है, via clathrin and dynin we take it inside. Okay, just remember that. एंड दूसरा वो होता है किस एंड रन डिस्चार्ज, कि जिसके थ्रू एक वेसाइकल में छोटा सा होल हमने क्रिएट कर दिया एंड देन इट डिस्चार्जेस इट कंटेंट एंड रिटर्न्स बैक. नो नीड ऑफ दिस क्लाथरिन एंड डायनिन. ठीक है, नाउ वी रिमेंबर जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है वो कैसा जनरेट हो सकता है. वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल व्हिच कैन जनरेट. या तो वो पॉजिटिवली हो जाएगा जिसे हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और इट कुड बी इनहिबिटरी. ठीक है, मतलब वो हाइपरपोलराइज हो जाएगा सेल ड्यू टू एनी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बीइंग रिलीज, जिसे हम कह देंगे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. वी हैव ईपीएसपीस एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स, और वी कैन हैव आईपीएसपीस इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स. ठीक है, सो हाउ डू वी जनरेट एन एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल? या तो सोडियम अंदर आ जाए, या फिर कैल्शियम अंदर आ जाए, या क्लोराइड जो है उसका डिक्रीज्ड इन्फ्लक्स हो, मतलब क्लोराइड अंदर कम आए या पोटेशियम बाहर कम जाए. ऑल ऑफ दीज विल मीडिएट योर एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. व्हाट अबाउट आईपीएसपीस? या तो पोटेशियम ज्यादा बाहर जाए, ठीक है, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाएगा, या फिर क्लोराइड अंदर ज्यादा जाए, तब भी मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाएगा, या फिर सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स रिड्यूस हो जाए, तो इसके अकॉर्डिंग भी जनरेट एन आईपीएसपी. सो समटाइम्स इट कैन कम एज डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं कि व्हाट मीडिएट्स एन एक्साइटेटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल, या कौन सा नहीं करता है, एंड उसके अकॉर्डिंग वी हैव दी कंफ्यूजिंग थिंग्स कि सोडियम अंदर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, जो भी है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन आंसर वेरी इजीली इफ यू रिमेंबर दैट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग कि यहाँ पे हमारा स्टिमुलस आया एंड वी जनरेट एन एक्साइटेटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल. मतलब या तो सोडियम अंदर आ रहा है, या पोटेशियम इफ्लक्स कम हो गया, या कैल्शियम इन्फ्लक्स इंक्रीज हो गया, और क्लोराइड इन्फ्लक्स हमने डिक्रीज कर दिया. सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी दैट वी कैन थिंक ऑफ. एंड ये कितने डिले के बाद हो रही है? बिकॉज इट्स अ केमिकल साइनैप्स, इट विल बी 0.5 मिली सेकेंड हमारा एटलीस्ट डिले होता है बिफोर जनरेटिंग एन एक्साइटेटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल. ठीक है, और आईपीएसपी कैसे मेडिएट होंगे? एग्जैक्ट ऑपोजिट. सोडियम इन्फ्लक्स कम, कैल्शियम इन्फ्लक्स कम, पोटेशियम इन्फ्लक्स ज्यादा, क्लोराइड इन्फ्लक्स ज्यादा. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग विल हाइपरपोलराइज द मेम्ब्रेन. ठीक है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दो टाइप के हमारे रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं. वी कैन हैव फास्ट रिस्पॉन्सेज, वी कैन हैव स्लो रिस्पॉन्सेज. हाउ डू वी, कैसे पता करें क्या है? फास्ट रिस्पॉन्सेज जो है ना, दे मेनली मीडिएटेड बाय आयन चैनल्स. ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स. मतलब दीज रिसेप्टर्स दे कैन फंक्शन एज एन आयन. कैन यू नेम वन? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर. ठीक है, एसिटाइल कोलिन जब बाइंड करता है टू द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, व्हाट हैपेंस? इट ओपन्स द सोडियम चैनल इनसाइड.
So that's an inotropic receptor. वो जो response होएगा वो कैसे होएगा? Very fast. ठीक है? What about the slow responses? जो slow responses हैं, they are mediated by something known as G protein coupled receptors. जो हमें पता है G protein coupled receptor, they're transmembrane उसके transmembrane receptor होता है. Basically it has 7 इसके domains होते हैं. That is why it's also known as serpentine receptor. तो जो GPCR हम कहते हैं, G protein coupled receptor, they're basically slow post synaptic responses. ठीक है? तो स्लो पोस्ट सिनेप्टिक रिस्पॉन्सेस हमारे ज्यादा चीजें मीडिएट करते हैं फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, वेयर आर स्लो जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स है रैपिडली दे आर वेरी शॉर्ट एक्टिंग. ठीक है, तो ये हमारे मेनली डिफरेंसेस बिटवीन द टू. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय एन आइनोट्रोपिक रिसेप्टर एंड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर. तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर क्या है? बेसिकली इट्स एन आयन चैनल. मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर इज अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो. इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक जी प्रोटीन जो होता है बेसिकली इट्स ट्राइमेरिक, वी नो इट. इट हैज जी अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट. वो जो अल्फा सब यूनिट होती है डिपेंड्स अपॉन विच अल्फा सब यूनिट इट इज. इफ इट इज जी एस टाइप और अगर अल्फा एस सब यूनिट हुई तो वो क्या करेगा? इट्स गोइंग टू स्टिमुलेट एडेनाइल साइक्लेज. If it is alpha I type, it's going to inhibit adenine cyclase. If it is alpha Q type, it's going to activate something known as phospholipase C, जिसके थ्रू हमारा कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है थ्रू द साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यू कैन वॉच फार्माकोलॉजी, उसमें इट इज बेटर गिवन. व्हाट अबाउट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स? तो दैट इज अ मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर. ठीक है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब न्यूरोट्रांसमीटर भी चला गया इनटू द साइनेप्टिक लेवल. व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ? साइनेप्टिक लेवल में जैसे न्यूरोट्रांसमीटर गया, नाउ इनएक्टिवेशन होगा ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन अगर रिलीज होता है तो ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो उसे ब्रेक कर देता है. तो कैसे कैसे हो सकता है? या तो हमने उसे इनएक्टिवेट कर दिया इन केस ऑफ योर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, और ये जो ट्रांसमीटर है डिफ्यूजेस आउट, कहीं और चला गया, क्लेफ्ट के परे चला गया. दैट इज वन मैकेनिज्म. और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, या फिर हम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में उसी को वापस ले लें, जिसमें हमारे बहुत सारे डिफरेंट हमारे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स एक्ट करते हैं. दे आर नोन एज लाइक योर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. ठीक है, तो वो सेरोटोनिन जो रिलीज होता है उसके रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं. सो इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन इन द साइनेप्टिक लेवल. उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सी दैट दिस इज ऑल व्हाट इट कैन हैपन. ऐसे इनएक्टिवेट हो सकता है कोई न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. जैसे हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिसीव होएगा या फायरिंग स्टिमुलस मिलेगा, दैट इज प्लस 20 मिलीवोल्ट, जस्ट अबाउट एट माइनस 55 मिलीवोल्ट, तो हमारे प्रोपगेटेड एक्शन पोटेंशियल विल गेट जनरेटेड. ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है. एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि समटाइम्स डिफरेंट न्यूरॉन्स जो है उनके पास डिफरेंट पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं वो एट द पोस्ट साइनेप्टिक साइट. सम माइट बी एन इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, सम माइट बी एन एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एंड सबके सब यहाँ पे आएंगे. एंड व्हाट इज दिस एरिया नोन एज? दिस इज नोन एज द ट्रिगर जोन. ठीक है, व्हाट इज दिस ट्रिगर जोन? यहाँ पे हम इसे कहते हैं एक्सॉन हिलॉक कहते हैं हम इसे. दिस एक्सॉन हिलॉक हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम चैनल्स. मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम चैनल्स. तो जितना भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसके अकॉर्डिंगली वेदर द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड और नॉट, दैट इज मेनली डिसाइडेड एट द एक्सॉन हिलॉक के लेवल पे, बिकॉज सोडियम चैनल्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे एक्सॉन हिलॉक पे. सो दिस व्हाट्स हैपनिंग. तो सबका समेशन होएगा यहाँ पे एट द ट्रिगर जोन, दैट इज द एक्सॉन हिलॉक. ठीक है, एंड वी नो अबाउट द टू समेशंस एज वेल. वी हैव टेम्पोरल समेशन, वी कैन हैव स्पेशल समेशंस. ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. ठीक है, राइट. So last thing, then we'll conclude this session is something about inhibition. Okay, what are the different types of inhibition do we have? We have post-synaptic inhibition, pre-synaptic inhibition, feedback inhibition, and feed-forward inhibition. Let's discuss each one. So what is this post-synaptic inhibition? मतलब कि post-synaptic is known, एक तो अगर IPSP अगर हो रहा है, if an IPSP generated, तो post-synaptic membrane तो खुद ही automatically inhibit हो रहा है, तो it's a direct inhibition. वरना we can have कि कोई post-synaptic discharge है, उसे हम किसी और तरीके से किसी और एक्सॉन से अगर हम उसे इनहिबिट करें, दैट इज नॉट इनडायरेक्ट इनहिबिशन. तो दैट इज अ पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन. ठीक है, तो दैट इज वन एग्जांपल कि अगर फॉर एग्जांपल अगर गाबा रिलीज होता है, इट इज बाय एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ओवर हियर, इट्स गोइंग टू इनहिबिट ओवर हियर, दैट इज व्हाई इट्स अ पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन. ठीक है, right? And one more example must be the reciprocal inhibition that we see in case of knee jerk reflex. Knee jerk reflex में क्या होता है? एक जो हमारा फ्लेक्सर मसल्स है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट मसल है, वो तो एक्साइट हो जाते हैं, पर दिस अल्फा मोटर न्यूरॉन आल्सो सेंड्स अ कोलैटरल, या इसी में से इट सेंड्स अ कोलैटरल व्हिच आल्सो स्टिमुलेट्स द इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स व्हिच आर गोइंग टू इनहिबिट दिस मसल एज वेल. ठीक है, जो एंटागनिस्ट मसल है इन केस में, दैट इज द एक्सटेंसर मसल्स. तो दिस इज आल्सो नोन एज रेसिप्रोकल इनहिबिशन. अगेन इट्स अ टाइप ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन, माइंड यू. ठीक है, व्हाट अबाउट प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन? मतलब साइनेप्स होने से पहले, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, जैसे प्री साइनेप्टिक, something is acting at the presynaptic level, that is known as presynaptic inhibition, and that will decrease the amount of neurotransmitter that is getting generated.
इस केस में we were modulating the potential which was in the postsynaptic memory. इस केस में हम न्यूरोट्रांसमीटर को ही डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. So that is known as presynaptic inhibition. So this is just a diagrammatic overview. This is postsynaptic and this is your, ये हमारे न्यूरॉन आ रहे हैं, इसके प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हम इनहिबिट करें, दैट इज प्रीसाइनेप्टिक इनहिबिशन, ठीक है. राइट. सो now we are going to have something known as negative feedback inhibition. Very important, ठीक है. Negative feedback inhibition ये है कि एक न्यूरॉन is inhibited by its own output, ठीक है. इसका बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल है रेनशॉ सेल, ठीक है. व्हाट इज दैट, लेट्स सी. रेनशॉ सेल का मतलब ये है, अल्फा मोटर न्यूरॉन ने एक एक्सॉन दिया, उसके कोलैटरल निकला, collateral goes to this Renshaw cell which is an interneuron and this inhibits itself only, ठीक है. मतलब it's a what is it type, it's a negative feedback inhibition. So feedback inhibition, it's also known as Renshaw cell inhibition, mainly inhibitory interneuron which is known as the Renshaw cell से mediate होता है at the level of the alpha motor neuron, ठीक है. And what is why do we need to do that, क्यों कर रहे हैं. मेनली अल्फा मोटर न्यूरॉन जब फायर करेंगे, बहुत सारे ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारे अल्फा मोटर न्यूरॉन फायर हो जाएं एंड वी माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन वेरी वेल. तो इसके लिए जो और सारे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स है उन्हें भी तो इनहिबिट करना पड़ेगा ना. तो जो भी सेलिएंट अल्फा मोटर न्यूरॉन होगा, मतलब सबसे प्रथम, दैट्स गोइंग टू इनहिबिट विद कोलैटरल्स, दैट्स गोइंग टू स्टिमुलेट योर रेनशॉ सेल, और वही उसी को इनहिबिट कर देगा, ठीक है. सो दैट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ द रेनशॉ सेल एंड दैट्स इट्स मेन यूज, ठीक है. सो दिस इज अगेन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. एक्चुअली हो क्या रहा है, कोलैटरल आया, इनहिबिटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया और इसी इनहिबिटर न्यूरॉन ने इसी को इनहिबिट कर दिया, ठीक है. नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट नेगेटिव फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन. फीड फॉरवर्ड का मतलब ये है, एक जो हमारे न्यूरॉन है, इट इज कनेक्टेड थ्रू टू पाथवेज, एक एक्साइटेटरी एंड वन इनहिबिटरी. और यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज फॉर नेगेटिव फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन इज योर at the level of the Purkinje cells and the level of the basket cells which are present in the cerebellum. इतना I think काफी होएगा. Just we're not going to get into the detail behind it, but you can see this what's happening. कि यहाँ पे Purkinje cells, how they're getting excited by something known as the parallel fibers, और यही parallel fibers जो है basket cell को stimulate करते हैं, जो कि Purkinje cell को खुद ही inhibit कर देंगे. So this is like something known as feed forward inhibition, ठीक है. So we have studied feedback कि कैसे वो खुद excite हुआ, अपने आप को inhibit कर दिया, and we are seeing what it was receiving. इट इज रिसीविंग टू टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, ठीक है. एक स्टिमुलस किसी और सेल को जा रहा है जो कि उसे वो इनहिबिट कर रहे हैं, दैट इज योर बास्केट सेल्स के लेवल पे, ठीक है. एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ दीज Purkinje cells are aligned like this, like a C fan, and इसके थ्रू हमारे जो डिफरेंट एक्सॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, दिस ऑल इज कमिंग. वी आर डिस्कसिंग दैट इन CNS फिजियोलॉजी मेनली, ठीक है. एंड वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टी, लेट्स जस्ट गो ओवर इट. यूनिडायरेक्शनल, राइट. साइनेप्टिक डिले है, बिल्कुल ट्रू, 0.5 मिलीसेकंड्स का, ठीक है. साइनेप्टिक फटीग भी हो सकता है, लाइक इट कुड बी, आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल से फायर कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है वो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीट हो जाए, ठीक है. सो दैट इज साइनेप्टिक फटीग, ठीक है. आई थिंक आज के सेशन के लिए इट माइट बी अ लिटिल टू ओवरवेलमिंग. अभी हमारे पास थोड़ा सा और है. आई वाज थिंकिंग दैट वी कुड फिनिश दिस इन वन सेशन ओनली, but since it is not possible, so let's just keep it for one more day, and we might cover even two topics the next day. So ये जो आगे वाला पोर्शन है वो हम कल कवर कर सकते हैं. आई होप दैट्स फाइन विद एवरीवन, ठीक है. एंड again reminding everyone, kal we are going to have a video in which we are going to discuss the कि कैसे we are going to carry on with the schedule that we have set for ourselves. We are already a tad bit behind, तो आई वुड सजेस्ट कि कल अगर वो वीडियो आ जाएगा एंड यू ऑल माइट बी रेडी विद वॉट एवर स्केड्यूल दैट यू हैव, जो भी हमने सेट किया है फॉर यू एज वेल एज अस गाइस, तो वो वी कैन फॉलो दैट एंड इसके अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवरसेल्व्स मोर प्रोडक्टिव व्हाइल वी आर एट होम और व्हाइल वी आर एट आवर इंटर्नशिप ईयर, और लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन जॉइन इन. ऑब्वियसली everyone's here, and whatever questions you have, feel free to ask them within the session, and I hope these are very they might prove helpful to you. These are very helpful for me as well. So kal Shubhangi aayegi and she's going to post a video in which she's going to discuss about ki kitna hamare paas time hai to finish physiology, or we can take some other subjects later on as well. And already we were supposed to end today nerve muscle physiology, but considering because it's a very big unit and we have covered quite a bit in 1 hour ka time basically. So even if you watch it at 2x or 1.5x, you're like mainly done with 70% of your nerve muscle physiology. Now the only thing that's left is muscle only, ठीक है. तो nerve तो पूरा खत्म हो गया, तो muscle is the only thing that's left. nerve muscle junction we have already studied as well, and synapses that was part of CNS वो भी आज हमने cover कर लिया है. I hope that's fine, ठीक है. तो I'll take my leave
And if you like this session, please give it a thumbs up. And I'll be waiting for you guys next day with the same amount of vigor and energy like you already have. Okay? I have a lot of fun making these sessions for you guys as well, and it's very normal, very comfortable. You should feel comfortable while you're here as well, and this is a very safe space. And you can ask anything. We are all learners, right? We learn every day of our life. So Abhi, this is also a learning process for us, and as doctors, this is always going to be that way only. है ना? We're going to be students our entire life. So let's just make this sessions productive for you guys as well and for me as well. Okay, so I'll be taking my leave today. It was a very nice session, Aj. We covered quite a bit. We've covered almost, I think, about more than 120 slides, in fact. Okay, so that's a big feat, no matter what. Okay, so I'm going to close the session now. Please give it a thumbs up and please share it with your friends if you like it. And thank you so much.